Hello friends, Jai Hind. Welcome to Sriji Informatics. In this today's video, we are going to discuss about some of the important concepts of instrumentation control engineering that can be helpful for your upcoming exams and if you're preparing for any interview. So without wasting the time, let's get started. Our first concepts is what is instrumentation and control. So generally instrumentation and control engineering is a branch of engineering that studies the measurement and control of a process variable and the design and implementation of the systems that incorporate them. So we can say that instrumentation and control engineering branch, it deals with the measurement and control. There are three steps for control: sense, compare and control, which means first we are sensing the quantity, then we are comparing the quantity with the standard quantity, and finally we incorporate the control. So these are the three steps for control: instrumentation control, sense, compare and control. Next question is what are the common process variables? So these are the four common process variables, which are temperature, pressure, flow level, vibration, viscosity and density. The SI unit of temperature is Kelvin, SI unit of pressure is Pascal, SI unit of flow is meter cube per second. So sometimes maybe they can ask, what is mean by sensor? So sensor is a device that measures a physical quantity and converts into the suitable signal which are suitable for processing. So that is all about the sensor. What is mean by transducer? So transducer is a device which converts the one form of energy to the another form of energy. Another question we have, what is active transducer? Active transducer generally we can say that the transducer which do not need external power supply. जैसे example में thermocouple और photocell दिया गया है. So if we take the example of thermocouple, so thermocouple is working on a Seebeck effect which generates the milliwatt when it is subjected to unknown temperature measurement के लिए use होता है. So we don't require any other device or any external power supply to work when we take the data from thermocouple. Passive transducer, so passive transducer they generally need external power supply for their operation. Example में है thermistor or LDR or any RTD. Standard range of pneumatic signal 3 to 15 psi and standard range of pound per square inch, and standard range of electrical signal in the industry which is a 4 to 20 milliampere. Next we have a temperature measurement. Generally temperature हम consider करते हैं measure of hotness or coldness. These are the device to measure the temperature. RTD which means resistor temperature detector, thermistor, thermocouple and radiation pyrometer. To measure the temperature we have four temperature scales: Celsius, Kelvin, Fahrenheit and Rankine. This is the conversion table which I have provided. So if they ask one temperature in Celsius and they ask to convert in Kelvin, अगर हमें Celsius में और Kelvin को convert करना है, तो we can use this equation or we can use any of this equation to convert one form of to one scale of temperature to the another scale. This is the difference between RTD, thermocouple and thermistor. RTD stands for resistor temperature detector, thermocouple and thermistor. So RTD है उसका response most linear है, most accurate है and better stability है. Thermocouple है वो Seebeck effect पे काम करता है, self powered है, rugged है और large temperature range है. And next we have a thermistor. Thermistor है वो it is a small size, fast response and high sensitivity. So अगर हमें पूछा जाए कि सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी किसकी है, सो द आंसर इज थर्मिस्टर. थर्मिस्टर सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, विच मीन्स थोड़ा ही अगर टेम्परेचर चेंज हुआ तो लार्ज रेजिस्टेंस चेंज होगा. आरटीडी का रिस्पॉन्स मोस्ट लीनियर है. थर्मोकपल है वो वाइड टेम्परेचर और रगड़ है और लार्ज टेम्परेचर रेंज है उसका. नेक्स्ट इज मोस्ट लीनियर थर्मोकपल. जैसे थर्मोकपल हमने प्रीवियस देखा कि सीबेक इफेक्ट पे काम करता है. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थर्मोकपल, बी, जे के, आर, एस, टी, वाई. और सबसे लीनियर थर्मोकपल है टाइप के टाइप, विच मीन्स क्रोमेल एंड एल्यूमेल. थर्मोकपल विद द हाईएस्ट सेंसिटिविटी विच मीन्स चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट. तो सबसे ज्यादा सेंसिटिविटी है टाइप ई थर्मोकपल की. और व्हाट इज द इकोनॉमिकल थर्मोकपल? सो इकोनॉमिकल विच मीन्स सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल थर्मोकपल कौन है? सो इट इज अ टाइप जे टाइप, आयन कॉन्स्टेंट. सो दिस इज ऑल अबाउट द टेम्परेचर मेजरमेंट. और थर्मिस्टर जो है विच इज अ मेड ऑफ इट इज एनटीसी पे काम करता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है. सो एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस टेम्परेचर डिक्रीजेस एंड वाइस वर्सा. वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेडिएशन पायरोमीटर. रेडिएशन पायरोमीटर जो है वो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ पे काम करता है. रेडिएशन पायरोमीटर जनरली अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए यूज होता है. नॉन कॉन्टेक्टिंग टाइप ऑफ डिवाइस होती है.
Radiation pyrometer है, it can also measure the temperature of a moving object and without non-contacting device है. Working principle of thermocouple already discussed है, Seebeck effect. And control is best suitable for temperature control loop. अगर temperature control loop के लिए हमें best controller चाहिए तो it is a PID. हमारे पास अगर ऑप्शन है proportional, proportional integral, proportional derivative और PID, so PID is the most appropriate controller for a temperature control loop. Next is the pressure measurement. Pressure, which means force per unit area. These are the conversion table. जैसे टेम्परेचर में हमारे पास डिफरेंट स्केल्स थे, जैसे सेल्सियस, केल्विन, रैंकिन और रूमर स्केल. ऐसे टेम्परेचर प्रेशर में भी हमारे पास डिफरेंट स्केल है, PSI है. सो दीज आर द कन्वर्जन. समटाइम्स they can ask in the exams or any interview. And this is the classification of a pressure measurement. मैकेनिकल डिवाइस और इलेक्ट्रोमैकेनिकल. मैकेनिकल डिवाइस में हमारे पास है मैनोमीटर, यूट्यूब, वेल टाइप और इंक्लाइन टाइप मैनोमीटर. In the electromechanical category, we have a diaphragm, bellows, Bourdon tube, and we have also, there are different types of Bourdon tube available: C type, spiral type, and helical type, depending on the pressure requirement they are using. This is the range of a pressure. Vacuum pressure generally considered as a pressure below atmospheric pressure, considered as a vacuum pressure, or total absolute pressure is the total of gauge pressure plus atmospheric pressure, generally considered as a absolute pressure. Flow measurement, generally flow measurement, we have three different transducer: variable head type, variable area type, and some miscellaneous. So in the variable head type, venturi tube, orifice and nozzle are coming. In the variable area type, we have a rotameter. In the miscellaneous, we have electromechanical, electromagnetic, turbine type flow meter. Reynolds number is a very important concept during your flow measurement. In the fluid, मोशन इन पाइप कैन बी कैरेक्टराइज्ड इन थ्री वे. लेमिनार फ्लो है, टर्बुलेंट फ्लो है. ये रेनॉल्ड्स नंबर का इक्वेशन है, वो हमें बताएगा कि वेदर अवर फ्लो इज टर्बुलेंट और लेमिनार. सो रेनॉल्ड नंबर जो है, विच इज वी डी रो अपॉन म्यू. सो रो स्टैंड्स फॉर डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, V stands for mean velocity of the fluid, D stands for pipe diameter, and eta or we can say mu, it is a dynamic viscosity of the fluid. So Reynolds number ज्यादा होगा तो viscosity कम रहेगी, Reynolds number कम होगा तो viscosity ज्यादा रहेगी. Sometimes this relation can be asked in your exams. And for laminar flow, Reynolds number जो होगा वो 2000 से कम होगा, और turbulent flow के लिए Reynolds number जो होगा वो 4000 से ज्यादा होगा. Next we have, which is a control valve. Control valve, it is a device which is used to regulate the flow of liquid or gas. कंट्रोल वाल्व जनरली इट इज अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट. अगर हम किसी भी कंट्रोल सिस्टम का एग्जांपल देखें तो कंट्रोल वाल्व इज अ फाइनल कंट्रोल एलिमेंट which is directly affecting the dynamics of the process. So final control element. The operating parts control valve जो है, these are the three characteristics of control valve: linear, क्विक ओपनिंग एंड इक्वल परसेंटेज. सो कंट्रोल वाल्व की कैरेक्टरिस्टिक्स दो कैटेगरी में होती है, जैसे परसेंटेज ऑफ स्टेम ट्रैवल एंड परसेंटेज ऑफ फ्लो, कि हम कितना स्टेम को ओपन या क्लोज करते हैं और कितना हमें फ्लो मिलता है. सो इन क्विक ओपनिंग वी आर गेटिंग by minimum stem travel we are getting the maximum flow, so it is a quick opening. In the linear, the proportion is linear, and the equal percentage, we have some percentage of stem travel and we are getting some percentage of flow. So this is the control valve characteristics. This is the control valve classification. Control valve classification में हमारे पास है linear type और rotary type. In the linear type we have diaphragm, globe valve and pinch valve, and in the rotary type हमारे पास है butterfly valve, ball valve and eccentric plug valve. So these are some of the concepts of control valve. The operating parts of a control valve which are normally exposed to the process fluid are referred as a control valve trim. Generally exams में पूछते हैं. Usually parts like stem, plug, disc, sitting surface, etc. are called as a control valve trim. कंट्रोल वाल्व में एक बहुत ही हमने वी ऑल्सो प्रिपेयर द सेपरेट वीडियो फॉर कंट्रोल वाल्व एंड आई विल गिव द लिंक इन द आई बटन. कंट्रोल वाल्व में जो पोजिशनर होता है उसका मेन फंक्शन होता है इट इज प्रोवाइडिंग द फीडबैक वेदर हम जो जितना भी उसको सिग्नल देते हैं वो एक्चुअल में इतना गया कि नहीं. सो वी आर टेकिंग द फीडबैक विद द यूज ऑफ कंट्रोल वाल्व पोजिशनर. एड टू ओपन वाल्व जनरली कंसिडर एज अ फेल क्लोज, और एड टू क्लोज जो है वो फेल ओपन उसको डिनोट करते हैं. कैविटेशन इन द कंट्रोल वाल्व इज कॉज्ड बाय द प्रेशर रिकवरी. कंट्रोल वाल्व में एक अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है विच इज अ रेंजेबिलिटी. रेंजेबिलिटी समटाइम रिफर एज इट इज अ मैक्सिमम कंट्रोलेबल फ्लो टू द मिनिमम कंट्रोलेबल फ्लो, सो दैट इज कंसिडर एज अ रेंजेबिलिटी. फैक्टर्स अफेक्टिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ वेरियस इंस्ट्रूमेंट. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जैसे हमारे पास डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट है. टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट है, प्रेशर, फ्लो, लेवल एंड कंट्रोल वाल्व.
सो टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट हम जब भी सिलेक्ट करेंगे तो विच क्राइटेरिया वी शुड कंसिडर वाइल सिलेक्टिंग द टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट. जैसे टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट हमने आगे टेम्परेचर के सेक्शन में स्टडी किए, जैसे आरटीडी है, थर्मोकपल है, थर्मिस्टर है, रेडिएशन पायरोमीटर्स है. सो व्हाट आर द फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फॉर सिलेक्शन ऑफ दिस टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट. सो फर्स्ट आएगा रेंज. सो रेंज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द टेम्परेचर इंस्ट्रूमेंट. सपोज हमें अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर मेजर करना है, सो वी कैन, तो हम आरटीडी को यूज नहीं करेंगे, बिकॉज आरटीडी, द ऑपरेटिंग रेंज ऑफ आरटीडी इज अप टू 800 डिग्री सेल्सियस. और अगर हमें 800 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा मेजर करना है तो वी शुड गो फॉर थर्मोकपल और एनी रेडिएशन पायरोमीटर. एक्यूरेसी कंसिडर एज ए डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, कि हमारा जो भी टेम्परेचर मेजरिंग डिवाइस होगी हमें कितना एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए. सो इफ वी वांट अ हायर एक्यूरेसी विल गो फॉर आरटीडी. कॉस्ट इज द अनदर इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग द इंस्ट्रूमेंट. टाइप ऑफ फंक्शंस मीन्स विच काइंड ऑफ आउटपुट वी वांट. सपोज अगर हम थर्मोकपल यूज करते हैं तो वी आर गेटिंग अ मिलीवोल्ट. अगर आरटीडी होगा तो वो करंट चेंज होगा, या थर्मिस्टर होगा तो उसमें रेजिस्टर हमको चेंज मिलेगा और उसको हम वेस्टर्न बीज की मदद से कुछ करंट में कैलिब्रेट करेंगे. एंड स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स मीन्स हाउ फास्ट वी आर गेटिंग अवर मेजरमेंट. सपोज अगर जब हम थर्मोमीटर से कोई चीज मेजर करते हैं, टेक्स सम टाइम. सो और अगर थर्मल गन से या इंफ्रारेड टाइप से अगर टेम्परेचर मेजर करते हो, वी आर गेटिंग इंस्टेंट रिजल्ट. सो स्पीड ऑफ रिस्पॉन्स इज वेरी इंपॉर्टेंट while selecting the temperature instrument. So these are the points, these are the factors affecting for the selection of temperature instruments: range, accuracy, cost, type of function, and speed of response. Next is the pressure is a force per unit area. प्रेशर इंस्ट्रूमेंट अगर कोई सिलेक्ट करते हैं तो इसमें भी हम रेंज सिलेक्ट करेंगे, जैसे टेम्परेचर में किया, जैसे वैसे ही प्रेशर में किया. अगर हमें हाई प्रेशर मेजर करना है तो हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे, लो प्रेशर मेजर करना है तो कौन सा यूज करेंगे. एक्यूरेसी, डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस, कॉस्ट, एंड टाइप ऑफ फंक्शन विच मीन्स कि हमें आउटपुट कैसा चाहिए. सो अगर हमें एनालॉग आउटपुट चाहिए तो वी आर गोइंग फॉर एनी गेज, जैसे सी टाइप बॉर्डन ट्यूब है, ऐसा कोई गेज यूज करेंगे. अगर हमें कोई डिजिटल चाहिए तो वी आर यूजिंग सम प्रेशर ट्रांसमीटर फॉर गेटिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फंक्शंस. एंड द माउंटिंग रिक्वायरमेंट विच मीन्स कि अगर हम प्रेशर का कोई इंस्ट्रूमेंट लेते हैं तो हम मेजर, हमारे प्लांट में अगर कोई क्वांटिटी प्रेशर को मेजर करना है, सो माउंटिंग रिक्वायरमेंट ऑल्सो कंसिडर कि हमारा जो प्रेशर गेज या प्रेशर इक्विपमेंट है वो हमारे सिस्टम में फिट हो रहा है कि नहीं. सो दिस इज द क्राइटेरिया फॉर प्रेशर इंस्ट्रूमेंट. नेक्स्ट इज द फ्लो में भी रेंज, एक्यूरेसी, कॉस्ट है. टाइप ऑफ फंक्शन विच मीन्स की देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्लो. जैसे वॉल्यूमेट्रिक फ्लो मेजर करना है मीटर क्यूब पर सेकंड, तो उसके लिए डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट होंगे. मास फ्लो मीटर है तो हमें केजी पर सेकंड में आउटपुट देगा, और इन्फरेंशियल फ्लो है तो वो हमें जो फ्लो रेट होगा वो स्क्वायर रूट ऑफ प्रेशर के टर्म में देंगे. सो विच काइंड ऑफ फंक्शन वी वांट. माउंटिंग रिक्वायरमेंट अगेन सेम एज द प्रेशर. लेवल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई सिलेक्ट करते हैं तो विच क्राइटेरिया वी शुड सिलेक्ट. रेंज, एक्यूरेसी, कॉस्ट. टाइप ऑफ फंक्शन विच मीन्स हमें कैसा आउटपुट चाहिए. लेवल में एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है विच इज कॉन्टेक्टिंग एंड नॉन कॉन्टेक्टिंग. हमारा जो लेवल सेंसर होगा, लेवल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होगा, वो हमारे जिसका भी हमें लेवल मेजर करना है उसके डायरेक्टली कांटेक्ट में रहेगा कि नहीं रहेगा. जैसे अगर हम कैपेसिटेंस टाइप का कुछ लेवल मेजरमेंट यूज करते हैं तो वो डायरेक्टली फ्लो के साथ और लेवल के साथ कांटेक्ट में रहेगा. अल्ट्रासोनिक यूज करते हैं, इट इज अ नॉन कॉन्टेक्टिंग डिवाइस है, सो हमें डायरेक्टली विदाउट एनी कॉन्टेक्ट वो हमें आउटपुट देगा. नेक्स्ट इज द कंट्रोल वाल्व में भी ऐसा है, रेंज, एक्यूरेसी, कॉस्ट है. टाइप ऑफ फंक्शन में जनरली रिफर सो मेनी कैटेगरीज है. जैसे हमको लीनियर हमारा कंट्रोल वाल्व या रोटरी कंट्रोल वाल्व चाहिए, या तो हमें ऑन ऑफ टाइप का कंट्रोल वाल्व चाहिए, या थ्रॉटलिंग चाहिए, मतलब 10, 20, 30, 40% ओपन करना. एंड अगेन द माउंटिंग रिक्वायरमेंट. सो दीज आर द वेरियस फैक्टर्स विच आर अफेक्टिंग फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, फ्लो, लेवल और कंट्रोल वाल्व में हमने देखा. नेक्स्ट वी हैव अ सीक्वेंस ऑफ कॉन्सेप्ट्स लाइक टाइप ऑफ द सिस्टम क्या होता है. अगर हम कंट्रोल सिस्टम की बात करें तो सिस्टम की टाइप क्या होगी, उसके पोल एट ओरिजिन. अगर हम कोई ट्रांसफर फंक्शन है उसमें जितने पोल ओरिजिन है उसका सिस्टम का टाइप उतना होगा. सपोज 2 पोल एट ओरिजिन है तो हमारा सिस्टम का टाइप 2 होगा. ऑर्डर ऑफ द सिस्टम क्या होता है, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम विच मीन्स कि हमारा मैक्सिमम डेरिवेटिव पावर कितना है. अगर हमारा कोई ट्रांसफर फंक्शन है उसका डिनोमिनेटर में एस स्क्वायर का टर्म आता है, मतलब इफ देर आर 2 नंबर ऑफ एनर्जी कंज्यूमिंग एलिमेंट, तो हमारा सिस्टम का ऑर्डर 2 होगा. फॉर व्हाट पर्पस पिरानी गेज इज यूज्ड, फॉर लो प्रेशर मेजरमेंट के लिए होता है. व्हाट इज मीन बाय पीएसआई ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, पाउंड पर स्क्वायर इंच.
बोलोमीटर इज यूज फॉर, बोलोमीटर किसके लिए यूज होता है? टू मेजर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. बैरोमीटर टू यूज द मेजर ऑफ एयर प्रेशर. सेलियोमीटर यूज टू मेजर द हाइट ऑफ अ क्लाउड बेस. स्ट्रोबोस्कोप किसके लिए यूज होता है? इट इज टू मेजर द एंगुलर वेलोसिटी. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर इज नॉट सुटेबल फॉर विच काइंड ऑफ फ्लोर्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लो मीटर अगर हम यूज करते हैं तो किसके लिए यूज नहीं होगा? तो इसे नॉन कंडक्टिव फ्लोर्स के लिए यूज नहीं होगा. हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर इज इट इज यूज टू मेजर द ह्यूमिडिटी. Generally, humidity is the amount of water vapor in the air. We have three types of humidity: absolute humidity, specific humidity, and relative humidity. Relative humidity generally unitless होती है, कई बार इंटरव्यू में या एग्जाम्स में पूछते हैं. और absolute humidity होता है, इट इज अ अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द पर्टिकुलर वॉल्यूम. सो उसका यूनिट होगा kg per meter cube. So this can be asked in your exams. Next exam is next MCQ. Next concept is what is lead compensator. So lead compensator क्या इंप्रूव करता है? सिस्टम का ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स इंप्रूव करता है. अभी हम कंट्रोल सेक्शन देखेंगे तो उसमें ज्यादा डिटेल में पता चलेगा. लीड कंपेंसेटर क्या होता है? इट इज अ स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करता है. एनर्जी मीटर एट आवर होम इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट. रेशियो कंट्रोल क्या होता है? कास्केड कंट्रोल क्या होता है? और नेम ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटम ट्यूब्स. रेशियो कंट्रोल विच मीन्स रेशियो कंट्रोल इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल वेयर टू डिस्टर्बेंसेस आर मेजर एंड हेल्ड इन अ रेशियो टू ईच अदर. जैसे कोई इंजन है, उसमें एयर और फ्यूल का रेशियो कैसे होना चाहिए. सो दैट इज कम्स इन द रेशियो कंट्रोल. नेक्स्ट वी हैव इज द कास्केड कंट्रोल. इन द कास्केड कंट्रोल is defined as a control system composed of two loops where the set point of one loop is the output of the controller of the other loop. विच मीन्स एक सिस्टम कास्केड कंट्रोल सिस्टम में एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे सिस्टम का सेट पॉइंट हो जाएगा. नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉटम ट्यूब्स, जैसे हमने डिस्कस किया, सी टाइप, स्पाइरल टाइप एंड हेलिकल टाइप. डिपेंडिंग ऑन द प्रेशर रिक्वायरमेंट वी आर यूजिंग दिस थ्री टाइप ऑफ बॉटम ट्यूब. प्राइमरी एलिमेंट यूज फॉर फ्लो मेजरमेंट: ओरिफिस प्लेट, वेंचुरी ट्यूब, पिटोट ट्यूब एंड फ्लो नोजल. प्राइमरी एलिमेंट फॉर मेजरिंग प्रेशर क्या होंगे? बॉटम ट्यूब होगा, डायफ्राम, कैप्सूल, बैलोज एंड प्रेशर स्प्रिंग्स. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो का यूनिट है मीटर क्यूब पर सेकंड. मास फ्लो का यूनिट है केजी पर सेकंड. These are the some of the symbols of instrumentation control. जैसे हमें पूछा जाए कि भाई न्यूमेटिक लाइन है तो वो उसका सिंबल कैसे होगा. अगर हमें कोई एमसीक्यू है उसमें ऐसा दिया होगा कि भाई ये कौन सी लाइन है. सो न्यूमेटिक लाइन में एक लाइन में ऐसे दो क्रॉस लाइंस होंगे. दिस इज अ सिंबल फॉर हाइड्रोलिक लाइन, कैपिलरी ट्यूबिंग, मैकेनिकल लिंक. इलेक्ट्रिकल लाइन जैसे डॉटेड रहेगी. फ्यूचर इक्विपमेंट, मेजर प्रोसेसेस, माइनर प्रोसेस. एंड दीज आर सम ऑफ द सिंबल्स ऑफ कंट्रोल वाल्व. जैसे कंट्रोल वाल्व इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू रेगुलेट द फ्लो ऑफ लिक्विड और गैस. जैसे गेट वाल है तो उसका सिंबल ये है. ग्लोब वाल है, बटरफ्लाई वाल, इट इज रोटरी वाल है. बॉल वाल है विच प्रोवाइड्स यू द टाइट शट ऑफ. प्लग वाल है एंड एंगल वाल, वो हमें आउटपुट परपेंडिकुलर आउटपुट देगा. थ्री वे वाल, डायफ्राम वाल एंड पिंच वाल. डायफ्राम वाल और पिंच वाल में इलास्टिक मटेरियल यूज होता है विच इज व्हेन इट इज सब्जेक्टेड टू प्रेशर वो एक्सपांड या कॉन्ट्रैक्ट होगा. कंट्रोल सिस्टम. सो व्हाट इज मीन बाय कंट्रोल सिस्टम? सो कंट्रोल can be defined as to maintain the desired condition in the system. So we have a open loop control system. In the open loop control system we have a controller, process and process output. This is the example of a closed loop system. Closed loop system में हमारे पास error detector रहेगा, हमारे पास feedback element रहेगा, feedback रहेगा. So in the closed loop control system we have a controller, we have a plant, we have a feedback. सो ये इनपुट है. जनरली इनपुट हमारा यहाँ सेट पॉइंट होगा. सपोज हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, सो वी आर हैविंग वन सेट पॉइंट. अगर हमारा एयर कंडीशन है तो यहाँ 22 डिग्री या 20 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो हमारा सेट पॉइंट रहेगा और वी कैन चेंज द सेट पॉइंट. और जो हमारा फीडबैक जो होगा वो कंटिन्यूसली हमारा टेम्परेचर सेंसर होगा, वो कंटिन्यूसली एटमोसफियर का एम्बिएंट टेम्परेचर मेजर करेगा और अकॉर्डिंग टू द set point it will take the correct, controller will take the corrective action based on the error. So this is all about the open loop and closed loop. Closed loop, open loop, closed loop का अगर difference देखें, हमारे we have also prepared the separate video for open loop and closed loop. Closed loop में हमारे पास error detector होगा, open loop में नहीं है. feedback होगा, इसमें feedback नहीं है. So this is all about the open loop and closed loop system. Standard test signal, standard test signal which means के step होगा तो 1/s, रैम्प होगा तो 1/s², इम्पल्स, साइनोसोडल एंड पल्स इनपुट. पीआईडी कंट्रोलर, पीआईडी कंट्रोलर स्टैंड्स फॉर प्रोपोर्शनल, इंटीग्रल एंड डेरिवेटिव कंट्रोलर. कोई भी सिस्टम, जैसे हमने ये क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम देखा, इसमें हम कंट्रोलर की जगह ऑन ऑफ कंट्रोलर भी यूज कर सकते हैं या पीआईडी कंट्रोलर यूज कर सकते हैं. पीआई कंट्रोलर
या कोई मॉडल प्रिडिक्टिव कंट्रोल या कोई भी हम कंट्रोलर यूज कर सकते हैं. सो if we use the PID controller, so these are the three gains: proportional gain, integral gain and derivative gain. तो these are the पैरामीटर के जैसे प्रोपोर्शनल गेन को हम इंक्रीज करते हैं तो राइज टाइम क्या होगा, डिक्रीज होगा, ओवरशूट इंक्रीज होगा, सेटलिंग टाइम में स्मॉल चेंज आएगा और स्टेडी स्टेट एरर होगा वो डिक्रीज होगा. इंटीग्रल गेन है, इंटीग्रल गेन जो है विच इंप्रूव्स द स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स एंड डेरिवेटिव एक्शन जो होगा वो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स को इंप्रूव करेगा. इंटीग्रल गेन में क्या होगा, जैसे ही हम उसको इंक्रीज करते हैं राइज टाइम डिक्रीज होगा, ओवरशूट इंक्रीज होगा, सेटलिंग टाइम जो होगा वो इंक्रीज होगा और स्टेडी स्टेट एरर है वो एलिमिनेट होगी. सो ऐसे जैसे जैसे ही मैंने कहा था कि इंटीग्रल जो एक्शन है विच एलिमिनेट्स द स्टेडी स्टेट आउटपुट, स्टेडी स्टेट एरर एंड जो डेरिवेटिव एक्शन होगा विच improves the transient response. What is feed forward controller? So feed forward controller क्या होता है कि act before the disturbance is felt by the process. It is good for sluggish system. जैसे feed forward controller है, मगर feed forward controller में एक criteria कि all the disturbances for the system should be measurable और known होने चाहिए, तभी हम, और system जो है वो sluggish होनी मतलब slow होनी चाहिए, तभी हम feed forward controller को effectively implement कर सकते हैं. Different control schemes like split range control system involves one measurement and more than one manipulated variables, but selective control scheme involve one manipulated variable and several controlled outputs. यहाँ हमने टर्मिनोलॉजी यूज किया मैनिपुलेटेड वेरिएबल. सो मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या होता है, मैनिपुलेटेड वेरिएबल इज द वेरिएबल विच इज यूज्ड टू अल्टर द वैल्यू ऑफ अ कंट्रोल वेरिएबल. सपोज हमें टेम्परेचर कंट्रोल करना है, अगर कोई जैसे कोई वाटर हीटिंग प्रोसेस है, अगर हमें उसमें टेम्परेचर इंक्रीज करना है हमारे लिक्विड का, सो मैनिपुलेटेड वेरिएबल क्या होगा, जैसे हम कोई स्टीम या कोई हीटर है तो वो हमारा मैनिपुलेटेड वेरिएबल होगा जिसकी मदद से हम फाइनल अपना कंट्रोल वेरिएबल को ट्यून कर सकते हैं. सो दिस इज मैनिपुलेटेड वेरिएबल. कंपेयर पीएलसी एंड डीसीएस. पीएलसी जनरली स्टैंड्स फॉर प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर. इट इज गुड फॉर अ सीक्वेंशियल कंट्रोल डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम. In the PLC, we have a single controller. In the DCS, we have a many multi-loop controller. PLC is the replacement of a conventional electromechanical relay system. DCS is the replacement of a single loop controller. PLC है वो more preferable for discrete control होगा and DCS is more preferable for regulatory control. Scan time 10 millisecond होगा, इसका scan time 18 to 500 millisecond होगा. It is suitable for few thousand IOs input outputs and DCS is suitable for many thousand IOs. In the PLC, we have so many programming language, but most preferable programming language is the ladder language. In the DCS, we have a functional block diagram, structural text, or any modules. And in the DCS, some of the modules are inbuiltly available. जैसे PID है और कई सारे ऐसे modules है वो inbuiltly available है, so it can reduce the complexity during your programming. In the PLC, hardware package includes PLC hardware, HMI, and other software are not part of this package. In the DCS, has its own HMI and other software packages. So this is the benefit of DCS. So this is all about the difference between PLC and DCS. We also prepared the detailed video. What is the difference between PLC and DCS? I will provide the link in the I button. Force, voltage and current analogy. So generally it is a comparison between three analogies: force, voltage and current. Force analogy में क्या होगा कि फोर्स ऑन मास, फोर्स ऑन डैम्पर एंड फोर्स ऑन स्प्रिंग. सो इनपुट होगा फोर्स और आउटपुट होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट. ये है वोल्टेज एनालॉजी. तो इन कंपैरिजन टेबल है, इसमें से हम क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकते हैं कि मास अगर है फोर्स एनालॉजी में तो उसका इक्विवेलेंट वोल्टेज एनालॉजी में क्या, दैट इज इंडक्टेंस, एंड फॉर इक्विवेलेंट एनालॉजी में, करंट एनालॉजी में हमारे पास है कैपेसिटेंस. सो दिस इज हाउ दे कैन आस्क ड्यूरिंग द एग्जाम्स. ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस. सो ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस है, उसमें दिस इज द ग्राफ. ये हमारा कोई हमने स्टेप इनपुट दिया हुआ है, हमारा सेट पॉइंट है, तो यहाँ से हमारा सिस्टम स्टार्ट होगा. तो व्हाट इज डिले टाइम? सो डिले टाइम, इट इज द टाइम रिक्वायर फॉर द सिस्टम टू रीच हाफ ऑफ इट्स फाइनल वैल्यू. जैसे हमारी सिस्टम का रिस्पॉन्स हमें यहाँ तक पहुंचना है, सो हाफ ऑफ द टाइम, जैसे 50% है, सो इट इज अ डिले टाइम. पिक टाइम. So peak time क्या होगा? Peak time, it is a time required for the response to reach the first peak of the overshoot. So यहाँ तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा, it is a peak time. Next होगा rise time. Rise time, it is a time required to reach the response up to 10% to 90% of its final value. जैसे 10% to 90%
फाइनल वैल्यू में पहुंचने का जितना टाइम लगेगा उसको राइज टाइम कहते हैं। जैसे ग्राफ में हम TR जो है उसको यहाँ देख सकते हैं 10% to 90%। सेटलिंग टाइम क्या होगा? सेटलिंग टाइम इट इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांजिएंट डैम्पिंग ऑसिलेशंस टू रीच एंड स्टे विद इन +or -2% और 5% ऑफ द फाइनल स्टेडी स्टेट वैल्यू। जैसे यहाँ हम इस ग्राफ में देखते हैं फाइनल 2% या 5% हमारे रिस्पॉन्स को पहुंचने में जितना टाइम लगेगा उसको सेटलिंग टाइम कहते हैं। दोस्तों दिस इज ऑल अबाउट द ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स एनालिसिस। पीक ओवरशूट, पीक ओवरशूट का इक्वेशन होगा MP = 100 × e⁻ pi zeta upon 1 - zeta square. So according to this they can ask the questions. Next is the lead compensator is used for improving the transient response. lag compensator generally improve होगा steady state response को improve करने के लिए। लीड कंपेंसेटर है जनरली हमारे डेरिवेटिव एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सो हमारा ट्रांजिएंट रिस्पांस को इंप्रूव करेगा। लेग कंपेंसेटर जनरली हमारे इंटीग्रल एक्शन को रिप्रेजेंट करता है, सो विच विल इंप्रूव द स्टेडी स्टेट रिस्पांस। एनर्जी मीटर एट अवर होम इज एन एग्जांपल ऑफ इंटीग्रेटिंग डिवाइस। रेशियो कंट्रोल, जनरली रेशियो कंट्रोल स्कीम है, इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ फीड फॉरवर्ड कंट्रोल वेयर टू डिस्टर्बेंसेस आर मेजर्ड एंड हेल्ड इन अ रेशियो टू ईच अदर। जैसे कोई हमारा इंजन है उसमें एयर टू फ्यूल रेशियो जैसे मेंटेन होता है परफेक्ट कंबशन के लिए, so it is a ratio control. Cascade control where we have more than one controller in series, so output of one controller becomes the set points of the second controller, so that is a cascade controller. Name the different types of board and tube. We have a C type, spiral type and helical type. Next we have a HSS. HSS stands for high select switch. It is a limit switch which is used whenever a variable should not exceed the upper limit. जैसे हमें HSS हमने सेट कर दिया है तो उसके कोई भी वेरिएबल हमारा जो कंट्रोल वेरिएबल है उसकी वैल्यू उससे ज्यादा नहीं बढ़नी चाहिए। LSS which means low select switch, so which is used whenever a variable should not exceed and lower limit. Advantages of feed forward control and disadvantages. So feed forward controller क्या होता है? It acts before the disturbance is felt by the process. It is good for slow systems. And disadvantage of feed forward control requires identification of all possible disturbances. जैसे feed forward controller में disturbance should be measurable and disturbance should be known. हमारी सिस्टम में डिस्टर्बेंस अफेक्ट करेगा उससे पहले ही वो एलिमिनेट हो जाएगा, बट वी शुड हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट द डिस्टर्बेंसेस एंड इट इज अनसेटिस्फैक्टरी फॉर स्लो प्रोसेस। अगर कोई हमारी जो सिस्टम है उसमें डेड टाइम होगा ज्यादा होगा तो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जो है वो सेटिस्फैक्टरी रिस्पॉन्स नहीं करेगा। सो फीड फॉरवर्ड कंट्रोलर जनरली सुटेबल फॉर sluggish processes. So this is all about the instrumentation and control engineering. I hope you like this video. Like this video and subscribe our channel for more videos. And एक बात आप सभी स्टूडेंट से कहना चाहूँगा, अपने माता पिता से प्यार करें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने देश की सेवा करें। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।